chapter 9, text number 30. सप्तम अध्याय नवम सप्तम स्कंद नवम अध्याय श्लोक नंबर 30 प्रहलादंकर प्रार्थना रे नृसिंहदेवଙ୍କର क्रोध उपशम. श्लोक till 30 we have studied yesterday. Now 30 today. 30 will just recap. 30 is saying एकत्वम एव अकेले आप ही है. एकत्वम एव जगत एकम अमुष्य जत्वम आदि अंतयो पृथक अवश्यसी मध्यतः च आदि अंत और मध्यम में ओनली आप ही रहते हैं. सृष्टवा गुण व्यतिकरम निजमाया यू क्रिएट द मटेरियल यूनिवर्स बाय योर माया माया. इदम नानाइव तेहि अवस्थितः तत् अनुप्रविष्ट. हे भगवान आपण निजको समग्र जगत रूप रे प्रकाशित करती. कारण सृष्टि पूर्व आपण थे, प्रलय पर आपण रहिबे एवं सृष्टि और प्रलयर मध्यवर्ती समय आपण पालन करेंगे. ता सबु ही प्रकृतिर तीनोटी गुणर क्रिया प्रतिक्रिया माध्यम रे आपणकर बहिरंगा शक्ति द्वारा संपादित हुए. अतएव अंतर बाहर जहाँ किसी विराजमान ता सब होचंदी आपण. My dear Lord, you alone manifest yourself as the entire cosmic manifestation. For you existed before the creation, you exist after the annihilation, and you are the maintainer between the beginning and the end. All this is done by your external energy through actions and reactions of the three modes of material nature. Therefore, whatever exists externally and internally is you alone. त्वं इदं सत् असत् ईश भगवान् तत अन्य माया जत आत्मपर बुद्धि इयम् अपार्थ जत जस्य जन्म निधनं स्थिति एकक्षणं च तत्वा एतद् एव वसुकालवत्. वसुकाल में पृथ्वी गुण एवं तहिर अतीत पृथ्वी सूक्ष्म तत्व वसुकालवत् अष्टितर्गो बीज कारण अवृक्ष कारण कार्य. हे भगवान, हे परमेश्वर, समग्र जड़ सृष्टि कारण आपण. समग्र जड़ सृष्टि कारण आपण एवं ए जड़ सृष्टि आपणकर शक्ति नहीं परिणाम. यदिओ समग्र सुव्यवस्थित ब्रह्मांड अन्य किसी नुहे आपणकर स्वरूप मात्र, तथापि आपण ताठारु भिन्न. मोर एवं तुमर धारणा अवश्य ही मिथ्या माया. कारण प्रत्येक वस्तु आपण ठारु उद्भूत होइथिबारु आपण ठारु भिन्न नुहे. वस्तुतः पक्षे जड़ जगत आपण ठारु अभिन्न एवं तार विनाश मध्य आपण द्वारा साधित हुए. आपण सहित आपण सृष्टिर संपर्क बीज और वृक्ष किंवा सूक्ष्म एवं स्थूल प्रकाश करे. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, the entire cosmic creation is caused by you, and the cosmic manifestation is an effect of your energy. Although the entire cosmos is but you alone, you keep yourself aloof from it. The conception of mine and yours is certainly a type of illusion, because everything is an animation from you and is therefore not different from you. Indeed, the cosmic manifestation is non-different from you, and the annihilation is also caused by you. This relationship between your lordship and the cosmos is illustrated by the example of the seed and the tree, or the subtle cause and the gross manifestation.
न नस्य इदम् आत्मनि जगत् विलयं मध्ये नस्य इदम् आत्मनि जगत् विलयं मध्ये कारण समुद्र जो प्रत्येक वस्तु सुरक्षित शक्ति रूपे संरक्षित था विलय अंग मध्ये शेषे आत्मना निज सुख अनुभव निरीह निरीह मन में विपरीत कहते हैं निरीह योगेन मिलित दृक् आत्मनिपिता निद्रा योगेन योग निद्रा भगवान आपण जाउछन्ति तुर्जी स्थितः न तु तमः न गुणांच ख्युखे जुखे हे परमेश्वर भगवान आपण प्रलय परे निजर सृजन शक्ति को निज मध्य रखते एवं सेतबेले मन हुए जेपरि आपण अर्धनिमीलित नेत्र निद्रामग्न किंतु प्रकृत में आपण साधारण मनुष्य पर निद्रा जाती नहीं कारण आपण सर्वदा जड़ शस्य अतीत तुरीय अवस्था आपण चिन्मय आनंद अनुभव करते कारण व्यवसाय विष्णु रूप आपण यहीपरि जड़ प्रकृति को स्पर्श न करी निजर चिन्मय स्थिति अवस्थान करते आपण निद्रित बोली मन हेले यह निद्रा अविद्याजनित निद्रा ठारू भिन्न भगवान केतବେଳେ ଶୁଅନ୍ତିନି 24/7 योग निद्रा ना yoga nidra means his nidra is not like our nidra our material nidra we to go to deep sleep we die huh? we go to deep sleep like dying we go to deep sleep what is happening around we don't know but bhagwan jo nidra mein jate yoga nidra he is knowing everything of everything that means he is awake always he never sleeps जहाँ कारण नव जले भजति स्म योग निद्रा अनंत जगदर्भ स्वरूप आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्मूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि भगवान टायर्ड नहीं होते where there is no time factor so their tiredness would not be coming na there is no time factor O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, after the annihilation the creative energy is kept in you, who appear to sleep with half-closed eyes. Actually, however, you do not sleep like an ordinary human being, for you are always in a transcendental stage, beyond the creation of material world, and you always feel transcendental bliss. As Karanadakashaya Vishnu, you thus remain in your transcendental status, not touching material objects, although you appear to sleep. The sleeping is distinct from sleeping in ignorance. तस्यैव ते वपुः इदं निजकाल सत्या संयोदिता प्रकृतिधर्मणः आत्मा गुणम् अम्बसी अनन्तशयना विरम समाधेः अभूत् नाभे अभूत् स्वकणिका पटवत् मा अब्जम् ये विशाल जड़ जगत आपण शरीर अटे ये विशाल जड़ जगत आपण शरीर अटे आपण काल शक्ति द्वारा प्रकृति क्षोभित हुए एवं ता फल प्रकृतिर 3 गुण प्रकाशित हुए आपण सेतबेले अनंत शेषंकर शय्यारू जागी उठती एवं आपण नाभिरू एक चिन्मय बीज उत्पन्न हुए ए बीजर विशाल ब्रह्मांड प्रकाशकारी पद्म उद्भूत हुए ठीक जपर एक क्षुद्र बीजरू एक विशाल बड़ वृक्ष जन्म हुए नाइस पढ़िए This cosmic manifestation, the material world, is also your body. This total lump of matter is agitated by your potent energy known as Kala Shakti, and thus the 3 modes of material nature are manifested. You awaken from the bed of seas, Ananta, and from your navel a small transcendental seed is generated. It is from this seed that the lotus flower of gigantic universe is manifested, exactly as a banyan tree grows from a small seed.
भगवान कारण समुद्र में, जस्ट इमेजिन दिस वे, भगवान कारण समुद्र में सोते हैं। कारण समुद्र में सोने के बाद because of perspiration is breathing, inhaling and exhaling on samudra, because perspiration samudra is being generated, and the samudra he sleeps half closed eyes on top of Ananta. So Ananta Vasudev, his name is Vasudev. So he is Karanagata Vishnu. And when he is breathing, inhaling and exhaling, so many Brahmandas are coming up. And now Bhagavan is going into every Brahmanda. Small, big, whatever his breathing is there, breathing particles, the small particles of breathing. So that is on the Brahmanda. So Bhagavan is going into that breathing. After breathing, can you go into inside your breathing? Possible. Not possible. What Bhagavan is possible. So वो जो breathing का inhaling out, exhaling करते हैं, तो universes are created. So Bhagavan is going into that Brahmanda, and Bhagavan ji from Karanagata he becomes Garbhodakasai. He goes into every particle, every Brahmanda. So every Brahmanda again it is half merged and half on space, and the 7 layers of Brahmanda. So from Garbhodakasai Vishnu, he again lays down on Ananta, expansion of Ananta, he lays down. From his level point is coming on lotus. Lotus flower. Lotus flower. Where golden lotus flower. Where Brahmaji resides. Brahmaji resides. So this is four-headed Brahma. Now, So another Brahmaji- different heads of Brahma. There is some small, big, different types of Brahmanas are there. So, Brahmaji, again, he is not finding out where I am coming from. Then he dived in, again is coming out. Then Krishna says, Tapa. Tapa. Narayana says, Tapa. Then he does tapasya. After doing tapasya, he is getting powerful, empowered by Lord to sub-create. Bhagavan has done creation first and sub-create. And before Brahma is creating, Bhagavan already has given everything in the Prakriti. How a living entity can exist. And when Lord is creating Brahma and other living entities coming from Brahma, so Bhagavan is going into every created being, into their hearts as Paramatma. ध्यान से सुने। तो कारणगतसाई विष्णु to गर्भोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु से ब्रह्मा आते हैं, और ब्रह्मा जितना क्रिएट करते हैं, भगवान जितना क्रिएट सबका हृदय में पार्टिकल करना सब जगह चले जाते हैं और वो परमात्मा इनकंसीवेबल, सोचने से बाहर। हाँ, कितने सारे ब्रह्मांड है यहाँ पे, कितने सारे जीव हैं। तो फिर भगवान जब ब्रह्मांड को खत्म करना चाहते हैं, तो जैसे क्रिएट हुआ था वैसे सबको खींच के अपने पास लेके आते हैं। तो भुगता कर जाते, again he creates, again he maintains, and again he annihilates. So भुगता proliferates means again he annihilates, creates, annihilates, like small children play. They will be playing with the toys, then again they will scatter, then again they will arrange, then again they will scatter. So Lord is supreme independent. So he is not under anybody's control. Jivatma is thinking that I am the Lord and only fighting here in material world. Tasambhava kavi ataham apasyamana tvam vijam atmani tatam savai vichintya na avindat अदसतम आपसो निमज्जमानः जाते अंकुरे कथम अपलभित बीजम। हे महापद्मरु उत्पन्न ब्रह्मा, सेई महापद्मरु उत्पन्न ब्रह्मा, सेई पद्म छड़ा आउ किछि देखिବାକୁ पाइले नाही। तेणु आपनको बाहरे अवस्थित बोली मन करी ब्रह्मा से जलरे निमग्न होई 7 वर्ष व्यापी से पद्मर उच्च को अन्वेषण कले, किंतु ता सत्वे मध्य से आपण खोजी पाइले नाही।
कारण बीज जेतेबेले अंकुरित हुए सेतबेले बीज देखा जाए बीज जेतेबेले अंकुरित हुए बीज देखा जाए here correctly saying what I said a bit change before. So here when Brahma ji has come, तो ब्रह्मा जी पद्म को बाहर जाके डाइविंग किए समुद्र के अंदर कहाँ से मैं आया बोलते then he could not find out. से महापद्म रो उत्पन्न ब्रह्मा से पद्म छड़ा और किछि देखिया पाइल नहीं तेणु से आपण को बाहर अवस्थित बोली मन करी ब्रह्मा जी थॉट यू आर आउटसाइड. सो अंदर ब्रह्मा से जल रे निमग्न होई 7 वर्ष व्यापी से पद्म रो उत्स को अन्वेषण करता. He was finding out the source of this problem. तार मध्य से आपको खोजी पाइले नहीं. 100 of years. Celestial years, not this years. हाँ, ब्रह्मा जी का years. Celestial years का कैलकुलेशन क्या है? ना 1 year here, 1 year is equal to 1 day plus 1 night. अब देवता लोगों में एक दिन is equal to यहाँ पे एक साल. Scientists also accept this. NASA scientists and all, they also accept it. Because their time limit is different. Here, not they couldn't find the time factor there. Yeah, read it. From the great lotus flower, Brahma was generated, but Brahma certainly could see nothing but the lotus. Therefore, thinking you to be outside, Lord Brahma dove into the water and attempted to find the source of the lotus for 100 years. He could find no trace of you. However, for when a seed fructifies, the original seed cannot be seen. 1 day for the demigods equals 6 of our months. 1 day of our demigods equals 6 month of our earthly planets. सातु आत्मजोनिहि अति विस्मितः आश्रितब्जं सातु आत्मजोनिहि सः किंतु से सातु आत्मजोनि अति विस्मित वो खुद ही जन्म हो गया ऐसा बोल के विस्मित हो गए. He became surprised. ना अपने आप जन्म हो गया ऐसा. सतु आत्मजोनि अति विस्मितः आश्रित अब्जं कालेन तीव्र तपसा उसका तपस्या के परिशुद्ध भाव त्वाम आत्मनि ईश भुवि गंधम इव अति सूक्ष्मम्. स्वाम आत्मनि ईश है भगवान आपण भगवान भूमि गंधम इव भूमि रे जो गंध यहाँ पे ये तो अगरबत्ती चल रहा है दिखाई दे रहा है. जो भूमि में जो गंध वो दिखाई देता है ओनली बारिश होने पर पता चलता है. तो त्वाम आत्मनि ईश भूमि गंधम इव अति सूक्ष्म भूमि गंधम इव अति सूक्ष्म बुद्ध इंद्रिय आश्रमये विततम तदर्श. आत्मजनी ब्रह्मा अत्यंत विस्मित हुए से पद्म को आश्रय करी बहु 7 वर्ष कठोर तपस्या करी पवित्र हुई सर्व कारण परम कारण रूपे भगवान को दर्शन करते. भगवान को दर्शन कैसे किए? 100 years तपस्या बहुत 7 वर्ष कठोर तपस्या करी. हम बोलते हैं भगवान को दिखाओ, हम क्या क्वालिफिकेशन है हमारा? हाँ, ब्रह्मा जी कितना तपस्या करने के बाद सैटिस्फाई करने के बाद भगवान को भगवान प्रदर्शन है. Until we make satisfied to the Lord, why Lord is very good? Qualification is that one should serve to the Lord, and by service we should satisfy to Lord. So then Lord will be able. हम जगन्नाथ मंदिर जाते हैं भगवान को देखेंगे. हम क्या देखेंगे? What is qualification do we have? भगवान should be able to see us. Why? Because when he gets satisfied by the service. इसलिए प्रभुपाद सब जगह लिखते हैं डिवोशनल सर्विस. Only by service you can satisfy, not by religious attitude one can in anyone.
Srila Prabhupada says, only my request to you all, again do not become hippies. Now I cannot chastise you because I'm already old. I am already old. So by chastisement, one cannot come to life. It is by Only by own will. adopting the correct thing. Own will, no? So only by service, because Srila Prabhupada did his service. So this is also Bhagavata Seva, na? This is Bhagavad Seva. Though we right now, we aspire to become your humble servant, Ramananda, Gopinath Das, like that. So everybody aspiring to become a servant of that person. So in that service, Krishna becomes happy. तो आत्मज्ञानी ब्रह्मा अत्यंत विस्मित हुई से पद्म को आश्रय करी बहु शत वर्ष कठोर तपस्या करी पवित्र हुई सर्व कारण और परम कारण रूपे भगवान को दर्शन करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद भगवान का दर्शन किया। कैसे नहीं कि उन्होंने तपस्या कर दी तो भगवान को देख लेंगे ना, भगवान उनका तपस्या में खुश हो गए, इसलिए भगवान ये दिखाई दिए। पृथ्वी रे गंध जेपरि अत्यंत सूक्ष्म भाव रे व्याप्त थाए, है ना, aroma of the sand or the soil, how subtle, it is not visible, only you can feel it. पृथ्वी रे गंध जेपरि अत्यंत सूक्ष्म भाव रे व्याप्त थाए सेपरि निज शरीर एवं इंद्रिय गुड़े करे से भगवान को व्याप्त थिबा देखले। ब्रह्मा जी could see what? निज शरीर रे और इंद्रिय गुड़े करे भगवान को आविर्भाव, भगवान इज देयर। Lord Brahma, who is celebrated as Atma Yoni, having been born without a mother, was struck with wonder. Thus he took shelter of the lotus flower, and when he had been purified after undergoing severe austerities for many hundred of years, he could see that the cause of all causes, the Supreme Personality of Godhead, was spread throughout his own body and senses, just as aroma, although very subtle, is perceived in the earth. Is perceived in the earth. It is perceived in the earth, though it is subtle. ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, don't feel sleepy. एवं सहस्रवदना अंग्रीं शीरकर एवं एपरि भावरे सहस्र बदन अंगी शील कर उदु भगवान का जैसे सहस्र बदन अंगी पार्षद लोग जब भी बोलते तभी ऐसे बोलते हैं यही परि भावरे, then he says यही परि भावरे से जानना कहेंगे बोलेंगे एवं सहस्र बदन अंगी शील कर उदु नासाद्य कर्ण नयन आवरण आयुध आढ़ संबंधित होके भगवान का पास सहस्र शील, सहस्र अंगुली, सहस्र शील कर, सहस्र उरु, सहस्र बदन, सहस्र नासाद, सहस्र कर्ण, सहस्र नयन, सहस्र आवरण, सहस्र आयुध में सहस्र मायामयम weapons मायामयम सत्उपलक्षिता सन्निवेशम दृष्ट्वा महापुरुषम आपमुदम विरिंचा मीन्स ब्रह्मा जी भगवान को देखे कि भगवान जी का इतना सारे मुख, इतना सारे, तो भगवद गीता में बोलते हैं सर्वतः पाणिपादं सर्वतः क्षीरमुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, एवरीथिंग इन कवर्स। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, ब्रह्मा सेतबेले सहस्र बदन चरण मस्तक हस्त उरु नासिका कर्ण और नयन समन्वित आपण देखिले। आपण सुंदर अलंकार अस्त्रशस्त्र सुसज्जित थिले। पाताल लोक को विस्तृत पद समन्वित चिन्मय लक्षण युक्त आपणकर विष्णु रूप दर्शन करी ब्रह्मा दिव्य आनंद लाभ। ये बैक साइड डोर बंद किए। आज थोड़ा सा जोर से गा रहे हैं इसलिए। हाँ, जिसको माइक मिलता है तो लेट अस डू द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इट।
ठीक है पढ़िए। Lord Brahma could then see. Lord Brahma could then see you possessing thousands and thousands of faces, feet, hands, heads, thighs, noses, ears, and eyes. You were very nicely dressed, being decorated and bedecked with varieties of ornaments and weapons. Seeing you in this form of Lord Vishnu, your symptoms and from being transcendental, your legs extending from the lower planets, Lord Brahma achieved transcendental bliss. When you are reading English, थोड़ा सा pause देके तो ठीक से पढ़िए ना. You will understand the meaning. Lord Brahma could You see. loudly read from the beginning. Lord Brahma could then see. Lord Brahma then could see. Pause. Then read. Lord Brahma could then see you Okay. possessing thousands and thousands of faces, Thousands and thousands of faces. feet, Heads. heads, hands, And thighs, noses, ears, and eyes. You were very nicely dressed, yeah. being decorated and bedecked with varieties of ornaments and weapons. Seeing you in this form of Lord Vishnu, your symptoms and form being transcendental, your legs extending from lower planets, Lord Brahma achieved transcendental bliss. Second time पढ़ेंगे तो clear आ जाएगा. First time I'm reading. So pause. When there is a comma, you should pause. When there is a full stop, you should stop. Then you start again. So that is the way you should. So tasmi bhavan ayasirah tanuvam hi vibra. Tasmi bhavan ayasirah ayagriva tanuvam hi vibra vedadruhu अतिकलो मधुकैटवाख्यो आख्यो हत्वा अनय श्रुतिगानां हत्वा अनय हत्वा मधुकैटव नामक ये जो श्लोक को हत्या करके हत्या अनय उद्धार करते हैं श्रुतिगणान सब वेद को उद्धार करते हैं श्रुतिगणान स्तुतिगणांश्च रजतमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुम् आमनन्ति सेमान सम्मान आमनन्ति। हे भगवान आपण हयग्रीव रूपरे आविर्भूत होई रज और तम गुणर प्रतीक मधु और कैटभ देयर आर टू डेमन्स नामक असुर द्वयଙ୍କୁ संहार करी ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान करते से कारण समस्त ऋषि माने आपणकर रूप को जड़ातीत शुद्ध सत्वमय बोली वर्णना करते से कारण समस्त ऋषि माने आपणकर रूप को जड़ातीत शुद्ध सत्वमय बोली वर्णना करते। My dear Lord, when you appeared as Hayagriva with the head of a horse, you killed two demons known as Madhu and Kaitava, who were full of the modes of passion and ignorance. Then you delivered the Vedic knowledge to Lord Brahma. For this reason, all the great saints accept your form as transcendental, untainted by the material qualities. Transcendental spelling? Transcendental. Please read it last time. For this reason, all the great saints accept your form as transcendental, untainted by material qualification. Untinged by material qualification. That is untinged. Untinged means there is nothing, no spot of material things. So that is pure Visuddha Sattva. Yes. Ithang नोत्रितिर्जागृषिवेदझसा अवतारो एपरि भावरे इथम एपरि भावरे भगवान जी नर रूप में कैसे न श्री कृष्ण श्री रामचंद्र तिर्जक पशु रूप रे वराह देव ऋषि रूप रे परशुराम देव रूप देवता रूप रे जस
मत्स्य कूर्म अवतार एक्सेट्रा। अवतार विभिन्न प्रकार अवतार द्वारा लोकान विभावयसी लोगों को रक्षा करते हैं। हंसी आपण बेले हत्या करते मध्य जगत प्रतिपान जो मैंने जगत रे प्रतिकूल अवस्था सृष्टि करती। भगवान बोलते हैं मतलब ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं जो जगत में प्रतिकूल परिवेश सृष्टि करते हैं आप उनको हत्या भी करोगे। धर्मम महापुरुष पासी युग अनुव्रतम। ये जो संसार भगवान बनाए हैं तो अच्छा से रहने के लिए बनाए हैं। यहाँ पे अच्छा से रहो, हरि भक्ति करो, गो बैक टू गॉड। अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएटिंग भगवान जी डज नॉट लाइक इट। धर्मम महापुरुष पासी युगानुव्रतम छन्ना कलौ जत अभवः त्रियुग अथ सत्वम। ये भगवान यहाँ पे लिखे त्रियुग। त्रियुग कहेंगे ना सत्य त्रेता द्वापर में, कलयुग में अवतार नहीं। तो कलयुग में अवतार नहीं बोल के इसका जो कथोपकथन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जानिथिले जे कलियुग बहु भक्त निजको भगवान बोली प्रचार करबा ପାଇଁ चेष्टा करिवे, तेणु से निजको भगवान बोली प्रकाश करे नाही। तेणु त्रियुग किंतु कलियुग रे भगवान चैतन्य महाप्रभु ओनली भक्त जानते हैं। सदस्य देनो हे भगवान ई प्रभाव रे आपण नर पशु ऋषि देवता मत्स्य अथवा कूर्म रूप रे अवतार करी समस्त जगत पालन करती एवं असुर मान संहार करती। हे भगवान आपण युग अनुसार धर्म को रक्षा करते किंतु कलियुग रे आपणकर भगवत्ता प्रकाश करते नहीं। तेणु आपण को त्रियुग कहा जाए। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में सेम श्लोक लिखे त्रियुग। इत्थं नोतिर्जगुरुषिदेव झसवतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान्। धर्मं महापुरुष पासी युगानुव्रतां छन्न कलौ जत् अभवः त्रियुगा अथ सत्वम्। In this way, my Lord, you appear in various incarnations as a human being, an animal, a great saint, a demigod, a fish, or a tortoise, thus maintaining the entire creation in different planetary systems and killing the demoniac principles. According to the age, O my Lord, you protect the principles of religion. In this age of Kali, however, you do not assert yourself as the Supreme Personality of Godhead, and therefore you are known as Triyuga, or the Lord who appears in the three yugas. नाएतद् मनः तव कथासु वैकुण्ठनाथ सम्भ्रियते दुरिता दुष्टम् असाधु तीव्रम् कामातुरम् हर्षशोकभयैषणम् आसम् अस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दिना। हे वैकुंठनाथ, मोर पापपूर्ण कामातुर मन हर्ष सुख भय और धन लाभ वासना पूर्ण ताफले ता अत्यंत कलुषित एवं आपण कथार प्रीति लाभ करूना। सुतरां दिन और पतित मु किपरि आपणकर तत्व आलोचना करने को सक्षम हेबी। प्रहलाद महाराज My dear Lord of the Vaikuntha planets, where there is no anxiety, my mind is extremely sinful and lusty, being sometimes so-called happy and sometimes so-called distressed. My mind is full of lamentation and fear, and it always seeks more and more money. Thus it has become most populated and is never satisfied in the topics concerning you. Thus it has become more. Thus it has become most polluted.
polluted को populated बोल देंगे तो how meaning will be there? Sorry. Thus, it has become most polluted and is never satisfied in topics of concerning you. I am therefore most fallen and poor. I am most fallen and poor. poor. In such a status of life, how shall I be able to discuss your activities? So Prahlad Maharaj is a Mahajan and he is keeping himself so humble position that I am most poor, the chairperson. How can I understand you? Being a lad of 5 years, he is the Mahajan. He is Mahajan. 5 years means body. Body. But Atma, the soul, is very advanced. So it is not the bodily thing. Guru's job is to remove the designations. That designations is bodily platform. I am man, I am woman, I am Indian, I am Brahman. These are bodily designations. So Prahlad Maharaj, though 5 years boy, he was exalted personality because he understood Krishna. Jai Krishna bhaje sei Guru hai. The person who understands Krishna bhaje sei Guru. जीवा एकतः चिदा विकर्षति मां अभिकृता शेषना अन्यथा त्वक् उदरं श्रवणं कुतश्चे घ्राण अन्यथा चपलद्रो कर्मशक्ति चपलद्रो क्वच कर्मशक्ति बहु सपत्नाइव गेहपतिं तुनन्ति. देखो कैसे एप्लीकेबल है हम सबके लिए. हे अच्युत, मतलब बहुत सपत्नियां, बहुत सारे स्त्री लोग रहेंगे, वाइफ लोग रहेंगे, तो दैट मैन को खींच के चारों तरफ प्राण लेंगे. वैसे हमारा बहुत सारे इंद्रिय है, तो ऐसी लाइफ इज full of difficulties. हे अच्युत, मोर अवस्था बहु पत्नी शिवा स्वामी करी जेमाने प्रत्येक निज निज आड़को आकृष्ट करने चेष्टा करती. जीवा सुस्वादु आहार प्रति, उपस्थ सुंदरी रमण प्रति, त्वक् कमल वस्तु प्रति, उदर भोजन प्रति, कर्ण ग्राह्य संगीत प्रति, नाक घ्राण प्रति, चंचल दृष्टि इंद्र तृप्तिदायक सुंदर दृश्य प्रति एवं कर्मेन्द्रिय विभिन्न कर्म प्रति मते आकर्षण करछुंती. एहिपरि भावरे विभिन्न दिगरे आकृष्ट होई मो विनाश प्राप्त होई. पढ़िए लाउडली पढ़िए. My dear Lord, O infallible one, my position is like that of a person who has many wives, all trying to attract him in their own way. For example, the tongue is attracted to palatable dishes, the genitals to sex with an attractive woman, and the sense of touch to contact with soft things. The belly, although filled, still wants to eat more, and the ear, not attempting to hear about you, is generally attracted to cinema songs. The sense of smell is attracted to yet another side. The restless eyes are attracted to scenes of sense gratification, and the active senses are attracted elsewhere. In this way, I am certainly embarrassed. एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्यां. भवसागर is considered Vaitharani. There's a Vaitharani, there's a hell is life में भी Vaitharani river. एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्यां. एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्यां. वैतरण्य अन्य जन्म मरणासन्निधीतं. अन्य गोटे जन्म मरणासन्निधीतं पश्यन् जनं स्वपर विग्रहैरमैतुम्. हन्तयति पाचर पिप्रुहि मूढम् अद्य. हन्तयति पाचर पिप्रुहि
मूढ़म अद्य। हे भगवान आपण सर्वदा मृत्यु नदीर अपर पार्श्वरे चिन्मय भाव अवस्थित, किंतु आमे आमर पाप कर्म फल जो यही नदीर यही पार्श्वरे दुख दुर्दशा भोग कर। प्रकृत पक्षे आमे माने यही नदी पतित होई बारंबार जन्म मृत्यु रूपक जंत्रणा भोग करूछु एवं अत्यंत घृणा वस्तु समूह आहार करूछु। दयाकरी आपण आम मान प्रति दृष्टिपात करंतु, केवल मो प्रति नुहे अन्य जे माने कष्ट भोग करूछंती सेमान प्रति मध्ये दृष्टिपात करंतु। आपणकर अहितुक कृपा और अनुकंपा प्रभाव रे आम मान उद्धार करंतु एवं पालन करंतु। My dear Lord, you were always transcendently situated on the other side of the river of death, but because of the reactions of our own activities, we are suffering on this side. Indeed, we have fallen into... On this side means in the material world. Indeed. आप समझ में you are understanding and reading तो? Yes. This side means in the material world we are suffering, and Bhagavan ji is in transcendental world. That's it. Indeed, we have fallen into this river and are repeatedly suffering the pains of birth and death and eating horrible things. Now kindly look upon us, not only upon me, but also upon all others who are suffering, and by your causeless mercy and compassion, deliver us and maintain us. He is so kind. He is not asking for himself only, he is asking for everybody. कानो अत्र ते अखिल गुरु भगवान, कानो अत्र ते अखिल गुरु भगवान, प्रयास उत्तारणे बद्ध जीवन उद्धार पाए, प्रयास उत्तारणे अस्य भव संभव लोप हेतु। मूढ़ेषु वै महत् अनुग्रह आर्तबन्धो, मूढ़ेषु वै महत् अनुग्रह आर्तबन्धो, किं तेन ते प्रियजनान् अनुसेवताम्। हे परमेश्वर भगवान, हे समग्र जगतर आदि गुरु, आपण सारा जगतर समस्त कार्यर परिचालक, अतएव आपण पक्षरे आपण सेवा युक्त अधपतित जीवन को उद्धार करवा कष्टसाध्य नुहे। अतएव आपण पक्षरे आपण सेवा युक्त अधपतित जीवन को उद्धार करवा कष्टसाध्य नुहे। आपण समस्त आत्मानकर बंधु और महत्तर कर्तव्य होची मूर्ख मान प्रति कृपा प्रदर्शन करवा। महत्व को क्या करना चाहिए ना, मूर्ख लोगों के लिए कृपा देना चाहिए। किंतु मन करूची आपणकर सेवारे युक्त आम परि व्यक्ति मान प्रति आपणकर अहितक कृपा प्रदर्शन करेंगे। बट आई एम थिंकिंग दैट हम लोग एक फॉलन सोल्स है, हम आपका सेवा करते हैं, आई एम श्योर दैट यू विल ब्रिंग क्वाइट कृपा ऑन अस। O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, original spiritual master of the entire world, what is the difficulty for you? You manage the affairs of the universe in delivering the fallen souls engaged in your devotional service. You are the friend of all suffering humanity, and for great personalities it is necessary to show mercy to the foolish. Therefore, I think that you will show your causeless mercy to the persons like us who engage in your service. नैवा उद्दिजे परदूरतया वैतरण्यान् तद्विज्य गायनमहामृतमग्नचित्तः सोचिततः विमुखचेतसः इन्द्रियर्थ माया सुखाय भरम् उद्धत विमूढान्। ये प्रभुपाद ये श्लोक को लिखे हैं। He is having compassion for the all living souls, like Prahlad Maharaj is feeling compassion for the all living souls. So Srila Prabhupada also he has quoted. I think this may be the important. Maybe this first page. Srimad Bhagavatam 7.9.43.
7.9.43. This sloka is mentioned in Srila Prabhupada's museum, then Vrindavan. Vrindavan you go, Srila Prabhupada's museum, no? Srila Prabhupada is the Delhi Bhagavatam class. So there this sloka has been mentioned. So Srila Prabhupada when he went to America, for this sloka, just to elevate the other people, foolish people in general. So this sloka, yes, very important sloka. हे सर्वोत्तम आपणकर गुणगान एवं कार्यकलाप चिंतार संपूर्ण रूपे मग्न रहा फल मु संसार भितर भय नुहे मोर एकमात्र चिंता केवल से समस्त मूर्ख और दुष्कृतकारी मानक जे माने जड़ सुख भोग से परिवार समाज और राष्ट्र विशाल परिकल्पना करते। O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. Repeat this now. I am not at all afraid of material existence. So Bhakta, he doesn't fear wherever Lord puts him. Sarga, Narka, Bhakta, wherever Bhagavan wants to keep, let him keep. Now Kutasthana Bibhyati, they don't fear any condition because they are Krishna conscious. Their only job is to spread Krishna consciousness. So Prahlad Maharaj is saying, I am not fearful from the material condition. Because always I know that you are with me. I am yours, you are mine. Eternally I am a servant, you are a master. So he knows this condition. So that is why he is not fearful. And who is fearful? Who is not having this knowledge? Not having this. Who is thinking that I am the Lord? Who is thinking Lord is up, I am apart from him, I am independent of him. So he is fearful. So next line is saying, read. Kita janma hoite adas, bahirmukha brahma padanahi. So read. Why the others are fearful? O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I am simply concerned with love for them. Prayena devamunaya suviso vimukti kama. Prayena devamunaya suvimukti kama. प्रायण साधारणतः हे देव हे भगवान मुनय महाऋषिगण स्वविमुक्ति काम वो चाहते हो खुद ही भगवान का भक्ति पाए, खुद ही भगवान को धाम को जाए. Other people, प्रायण means other जो transcendentalist. प्रायण देव हे देवा हे नृसिंहदेव जी जो एडवांस सोर्स है वो चाहते हैं वो भी मुक्ति पा जाए, वो लोग अपना मुक्ति हो जाए, बाकी लोग नहीं. What about others? तो इसे प्रायण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा, अपना विमुक्ति कामा, अपना विमुक्ति कारण के लिए क्या करते हैं? मौनम चरन्ति, क्या कहते हैं? मौन व्रत रखते हैं. They don't say दूसरों के लिए मौन व्रत रखते हैं मतलब अपना साधना में लगे. They don't teach Krishna consciousness. अपना तो what is the use of that? That you read ना, पढ़ेंगे क्या लिखे हैं? मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा. मौन व्रत रखते हैं बट बाकी लोगों को हरे कृष्ण मंत्र नहीं देते हैं. न एतान विहाय कृपणां विमुखे एक न अन्यं तदस्य शरणं भ्रमतः अनुपस्ये. ये भगवान नृसिंहदेव मुनि माने केवल सेमानकर मुक्ति पाए आग्रही. ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗର ଓ ସହର ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ କିମ୍ବା ଅରଣ୍ୟ ଗମନ କରନ୍ତି. ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜର ମୁକ୍ତି କାମନା କରୁନାହିଁ. ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟତୀତ କେହି କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ.
ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମ ଶରଣରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପଢ଼ିଏ। My dear Lord Nrsingadeva, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. Not caring for the big cities and towns, they go to the Himalayas or the forest to meditate with the vows of silence, Mauna Vrata. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back. To shelter at your lotus feet. That means Krishna consciousness movement what he made for preaching movement. We should preach. Jare dekho tare kho Krishna upadesh. Guru hai tare dekho. So Chaitanya Mahaprabhu said the same thing. भगवान जी आशीर्वाद करेंगे तब जाके कहेगा कितना में ब्लड खर्चा कर दो आप. That is why even Prahlad Maharaj, you are not listening. Prahlad Maharaj instruction last two slokas. Srila Prabhupada also told Krishna is not cheap, that किसी को भी आप मारते रहो. Jad Maithunadi, this is also good sloka. Jad Maithunadi, Gromedhi, Sukham, Hitucham, Jad Maithunadi. Sex life in Gromedhi life में क्या है? Sukham, वो भी सुख मिलता है. But तुच्छम तुच्छ सुखम. केंद्रीय तुच्छ सुखम ना कंडोयेना, कंडोयनेना, कंडोयनेन reaching जो ring bomb. कंडोयनेना करयो इव दुख दुखम. करयो इव हाथ को हाथ इचिंग करता है, इचिंग होने में ब्लड आ जाएगा, उसको दुख वो पेन हो जाएगा. दुखम तृप्तन्ति नय कृपणा बहु दुख भाजा. कृपणा तृप्तन्ति नय कृपणा. कृपण कृपण लोग क्या करते हैं? तृप्तन्ति नय, दे डू नॉट बिकम हैप्पी. मूर्ख व्यक्ति कृपणा बहु दुख भाजा, विभिन्न प्रकार जड़ दुख भोग करते. तन्नुतिवत् मनसीजम विसहेत धीरः. विसहेत धीरः. धीर लोग क्या चाहेंगे? क्या सोचेंगे? ये सब ऑन विसहे इज नॉट गुड. कुंडियर उपशम पाई दुई हाथर घर्षण सहित मैथुन को तुलना करा जायछि. गृहमेधी बा आध्यात्मिक ज्ञान रहित तथाकथित गृहस्थ माने मने करंती जे एही कुंडी हेबाटा सर्वश्रेष्ठ सुख, किंतु प्रकृत पक्षे ता हेउछि समस्त दुखर उच्च. कृपण किंवा मूर्ख माने जे माने ब्राह्मणकर ठीक विपरीत बारंबार इंद्रिय सुख भोग फलरे मध्य से माने केते बेले तृप्त होंती नहीं, किंतु जे माने धीर से माने ए कुंडे को सहाय करंती एवं ता फलरे से मन को मूढ़ मान को परे दुख भोग करिवे को हे नहीं. कृपण मींस नाइजर. उसका उल्टा क्या है? उदार. उदार. और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण मींस ब्रह्म जानती थी. ब्राह्मण who knows the supreme lord, who spread all over, very magnanimous. The brahman. Krupana means, Krupana example is like that he is very one person is very rich person, But he doesn't know about Lord. no, he is very materially rich person, but he will not be utilized them. अपना लॉकर खुलेगा, then he will see the money, he will close it. He will not use it. That is not Krupana. He has, but he will not utilize that for the right purpose. That is Krupana. So Bhagavan ji has given every intelligence to every person. But the Krupana क्या करेगा? Intelligence use नहीं करेगा. No, I will not use this intelligence for Krishna Bhakti. That is the Krupana. But a Brahmana, he utilizes the intelligence for Krishna Bhakti. He understands I am the servant of the Lord. Brahma जानती है Brahma. But Krupana, he doesn't want to know it. भगवान दिए सब कुछ, but he doesn't want to engage that. That is Krupana. Means मूर्ख व्यक्ति.
Seklep is compared to the rubbing of two hands to relieve an itch. Grihamedhis, so-called grihasthas, who have no spiritual knowledge, think that this itching is the greatest platform of happiness, although actually it is a source of distress. The Kripanas, the fools who are just the opposite of Brahmanas, are not satisfied by repeated sensuous enjoyment. Those who are Dhira, however, who are sober and who tolerate this itching, are not subjected to the suffering of fools and rascals. Maunavrata Sutatapaha Adhyayana Sadharma. Maunavrata Suta means Vedic Jnana. Tapaha Adhyayana Sadharma. Sadharma means Pranasam Dharma. व्याख्या में शास्त्र व्याख्या करने का, रह निर्जन स्थान में रहने का, व्याख्या जप समाधय अपवर्ग्य मुक्ति पथ पाए, जप समाधय, ये जो 10 आइटम है, मौन व्रत सुत तप अध्ययन 5, स्वधर्म 6, व्याख्या 7, रह 8, जप 9, समाधय समाधि 10, अपवर्ग्य, ये अपवर्ग मीन्स मुक्ति हुआ पाए, ये 10 रास्ता, there are way to go to come. प्राय परम पुरुष ते तो अजीत इंद्रियाणाम, हे भगवान, लेकिन जो अजीत इंद्रियां, जिसका इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, वाता भवन्ति उत नवात्र तु दाम्भिकानाम, हाँ, जे प्रकार लोक अत्यंत दाम्भिक, तेणु ये उपाय सफल हो न पाए। कौन हे परमेश्वर भगवान, मुक्ति मार्ग रे 10 उपाय, मौन व्रत वैदिक ज्ञान आहरण, तपस्या वैदिक शास्त्र अध्ययन, वर्णाश्रम धर्म आचरण, धर्मशास्त्र व्याख्या, निर्जन स्थान रे वास, मंत्र जप और समाधि। मुक्तिर समस्त उपाय गुड़िक अजित इंद्रिय व्यक्ति मानकर पेशादारी अभ्यास और जीविका। क्या बोले? मुक्तिर समस्त उपाय गुड़िक अजितेंद्रिय व्यक्ति मानकर पेशादारी अभ्यास और जीविका। ये लोग जो मौन व्रत करते हैं, अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो क्या करते हैं? अपना लिविंग, हाँ, they want to live, they want to earn some money on basis of this. ये प्रकार लोग बोले अत्यंत दाम्भिक, that ये उपाय बड़े सफल हो गए हैं। When somebody is earning, makes his earning on basis of this, why? Because their senses are not controlled. O Supreme Personality of Godhead, there are 10 prescribed methods on the path to liberation: to remain silent, not to speak to anyone, to observe vows, to amass all kinds of Vedic knowledge, to undergo austerities, to study the Vedas and other Vedic lectures, to execute the duties of Varnashrama Dharma, to explain these Shastras, to stay in a solitary place, to chant mantras silently, and to be absorbed in trance. These different methods for liberation are generally only a position. These different methods for liberation are generally only a professional practice and means of livelihood for those who have not conquered their senses. Because such persons are falsely proud, these procedures may not be successful. You have to repeat again and again English. I'm first time reading this. Yes. Books are there, you do not have time to read books. Find out some time and read nicely English. The proper made in English, original translation. रूपे में सदसती तव देव सृष्टे, रूपे, one more. रूपे में सदसती तव देव सृष्टे, विजयं पुरो इव न च अन्या अरूपकस्य, युक्तः समक्षं वयत्र विचक्षन्ति त्वाम्, योगेन बन्धिमिव दारुषु नम्यता
प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा देखा जाए जे जड़ जगत रे कार्य एवं कारण रूप भगवान के रूप अटे। कारण जड़ जगत तांकरी शक्ति, कार्य और कारण उभय भगवान शक्ति व्यतीत अन्य किछि नुहे। तेणु हे भगवान, ज्ञानी व्यक्ति जेपरि कार्य और कारण विचार करी देखि पाती किपरि काठ मध्य अग्नि व्याप्त, सेपरि भगवान प्रेममय सेवार युक्त भक्त मध्य हृदयंगम करि पारंती जे आपण ही कार्य और कारण। By authorized Vedic knowledge, one can see that the forms of cause and effect in the cosmic manifestation belong to the Supreme Personality of Godhead, for the cosmic manifestation in His energy is His energy. Both cause and effect are nothing but energies of the Lord. Therefore, O my Lord, just as a wise man, by considering cause and effect, can see how fire pervades wood, those engaged in devotional service understand how you are both the cause and the effect. सब ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। Here cause of all परम कृष्ण। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त जय गौरवानंद। जय जय नंदा यशोदा दुला, गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंदा यशोदा दुला, गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 मेरे गोपाल, गोपाल गोपाल गोपाल